वित्त मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है तो मुझे आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। सीधे चलते हैं नई दिल्ली, वित्त मंत्री जी बात कर रही हैं। आइए सुनते हैं बजट पर पहली प्रतिक्रिया वित्त मंत्री जी की जो आती दिख रही है। आइए सुन लेते हैं उसे। I offer my sincere congratulations to the Minister of Finance and Corporate Affairs, Srimati Nirmala Sitharaman ji, for presenting the budget in Parliament today. Ma'am, we are privileged and honored to have you with us. I extend a warm welcome to you, ma'am. I extend warm welcome to Minister of State for Finance and Corporate Affairs, Sri Anurag Singh Thakur ji. I welcome Finance Secretary Dr. Ajay Bhushan Pandey, Secretary Expenditure, Sri T.B. Somanathan, Secretary Financial Services, Sri Devasis Pandey, Secretary Economic Affairs, Sri Tarun Bajaj, Secretary Deepam, Sri Tuhin Kant Pandey, Chief Economic Advisor, Dr. K.V. Subramanian. First, the Finance Minister will make her opening remarks, then we will take some questions from you friends. Ma'am, over to you, please. Thank you and good afternoon. This budget, of course, comes at a time when all of us desire to give greater impetus to the economy. And that impetus, we thought, would be qualitatively spent and give the necessary demand push if we choose to spend big on infrastructure. That is why, if there are two important features of this budget, it is that we chose to spend big on infrastructure, which spans across roads, bridges, ports, power generation, and so on. And also to, as a second feature, attend to the need of the health sector. And even there, capacities for better health management had to be brought in the light of what we have gone through in the last year. And therefore, capacity building in health has taken a very big place in the budget. I've just given a probably just a feeler on what capacities we are talking about, whether it is establishing of labs, whether it is establishing of National Institute of Virology, or whether it is looking at the blocks where you need critical care centers, or whether you're looking at testing labs. Let's just remind ourselves that when the lockdown happened, we had probably just a few, two, if I'm right, 2 or 3 testing labs in this country. During the lockdown, that number was increased to a couple of hundred. Now, therefore, one of the things that we've aimed here is testing labs, Institute of Virology, aspirational districts having better health care. So, infrastructure spend for health has gone down to the level of planning for the block level requirements, aspirational district level requirements, state level requirements, and national institute level requirements. So 2 features, when I said, are one in general spending on infrastructure, for which there is a 37% increase in the budget. 5,45,000 crores is what we are giving for this year. And health, it was also something which received something like 94,000 crores in BE of this year, has gone to 223 lakh crores. So you find big numbers in health, big numbers in infrastructure.
But this doesn't really mean that we've ignored agriculture, where there too we have placed emphasis. I've increased, as I read it out in the budget, the allocation for NABARD for being able to send more credit through to the farmers. Agricultural infrastructure development cess is something which we are bringing in without on any one single item wherein we are putting the cess, the end consumer paying more than what he's paying today. It is just a restructuring we've done, for instance, of the basic customs duty, where it was, let us say, 12%, we brought it down to 7% and added possibly only 3% on the infrastructure development cess. End of the day, the consumer has ended up paying that much only or less. In no category has he ended up paying more after the agricultural infrastructure development cess. That we have done only because we wanted to be sure that in order to improve agricultural infrastructure, we have a dedicated amount coming out of the budget, rather than that going into the consolidated fund. It might still go, but we know what has got to be used for agricultural infrastructure. So if these are the kinds of things broadly we've done, equally important is the reform that we're bringing in the financial sectors. Disinvestment to continue, LIC to have IPO, insurance sector to have more in terms of opening up for 74% for FDI. These are very clearly steps, progressive steps in financial sector. Other than that, one major cry of all the banks have been the NPAs, for which we have been repeatedly giving capital infusion. In order that the bank books are cleared and cleaned up, we have come with an announcement of a formulation through which the NPAs will be culled out of the bank's books based on some formulation, not any discretion there. It goes to a holding company-like structure, which after doing the necessary, sprucing up and also cleaning up and weeding out problems of that particular asset, will be through an open process, attract asset reconstruction companies which can come and bid for those assets. Even at that stage, after some haircut, obviously, banks will get some money back to those NPAs, for which they only kept provisioning for the NPA, but didn't have the wherewithal to dispose them off legitimately. So we are giving that comfort to the banks. And also for funding the infrastructural requirements, a development finance institution is. बिल्कुल, तो वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में हम फिर पहुंचेंगे वहां पर और विस्तार से करेंगे बातचीत, और हमारे संवाददाता भी वहां पर है जो उनसे सवाल पूछेंगे। और शाम 6 बजे वित्त मंत्री का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए आप हिंदी में हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होंगी लाइव आज शाम 6 बजे। ये इंटरव्यू आपके लिए आने की तैयारी में है। तो ये बड़ा इंटरव्यू आज का वित्त मंत्री का आप जी बिजनेस पर अपने चहेते चैनल पर शाम 6 बजे देख पाएंगे। आखिरी 10 मिनट बचे हैं, फटाफट से क्लोजिंग वाली स्ट्रेटेजी ले ली जाए। जी सर, बिल्कुल। दीप, वैसे तो आज डेटा देखने का वक्त मिला नहीं, और वैसे डेटा में बहुत ज्यादा बदलाव है भी नहीं। मैं जब आशीष को पूछ रहा था तो आशीष का कहना यही था कि डेटा में बहुत ज्यादा बदला नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर कट है। पहला, जिस तरह की 14,200 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी की मिल रही है, ये करेक्शन पूरा होकर बढ़ने के संकेत है। आपको याद होगा दीप, हमने जब टॉप बनने का फॉर्मूला दिया था, काफी लोग कह रहे थे कि उसके बाद से गिरना शुरू हुआ है। आप देख लीजिए कहां से मार्केट घुमा है। एग्जैक्टली 13,850, 13,550 दूसरा लेवल था, 13,650 के आसपास से वहां से घुमा है। तो अभी भी मार्केट का ट्रेंड कहीं कोई बदला नहीं है, और आज की क्लोजिंग के बाद कल के लिए ट्रेंड पॉजिटिव है। तो आपको करना क्या है, आप 14,300 का कॉल ऑप्शन खरीद के जाइए। अगर आपको रिस्क लगती है तो 14,500 का कॉल ऑप्शन सामने बेच सकते हैं। 14,600 का बेचिए तो थोड़ा ऊपर का दूर का बेचिए। और जो पुरानी स्ट्रेटेजी हमारी थी आउट ऑफ द मनी पुट खरीदने की, अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड करने के लिए, उसे बदल दीजिए। अच्छा, अब बजट आपके निकल गया है, ग्लोबल मार्केट्स भी आपके स्टेबल होने के संकेत दे रहा है। अब आपको ऊपर का कॉल बेचना है, अब पुट नहीं खरीदना। तो आप कॉल खरीदिए, फ्यूचर खरीदिए, सामने एक ऊपर का कॉल ऑप्शन बेच दीजिए। तो यहां पर भी 14,200 के ऊपर की क्लोजिंग पर तेजी करने की राय है। 33,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होता दिख रहा है। खुला नीला आकाश है,
खरीद कर जाइए, खरीद कर जाए। यस 100%। बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों कल के लिए तेजी की पोजीशन। आपने आज का जोक सुना ना, बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस तो कुछ भी नहीं 3:30 PM 3:30 बजे ही रुकेगा। रेजिस्टेंस बस वही है बाजार में। बिल्कुल 3:30 बजे ही रुकेगा, उसके पहले न थकेगा न झुकेगा। ये है बैंक निफ्टी का दमदार एक्शन आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। आशु सर देना चाहते हैं अपना एक कॉल। आशु सर जल्दी से बताएं। अनिल जी, इन लाइन विद जो आप बात कर रहे हैं उसी पे कॉल है। निफ्टी की 14,300 की अनिल जी कॉल बिल्कुल लेके जानी चाहिए, प्लेन वनीला कॉल, और कुछ नहीं बेचना है इसके अगेंस्ट, कोई स्प्रेड नहीं, सिंपल कॉल लेके जाएं और इसका 25 से 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे कल मॉर्निंग का, और BTST निफ्टी की कॉल करनी चाहिए। जो बैंक निफ्टी में हुआ अनिल जी, वो निफ्टी में भी कैचअप होगा, और मुझे लगता है कि ये अभी जो एक दिन में जब शॉर्ट्स होते हैं ना, तो इतनी जल्दी वो कवर नहीं होते, वो देखना चाहते हैं। तो शाम को जिस तरह से जब इंटरप्रिटेशन निकल के आएगी तो कल हमें लगता है कि गैप अप हो सकता है। बिल्कुल कल गैप अप के पूरे आसार, और ऐसे में एक कॉल और आ रहा है, और ये जॉइंट कॉल है वी फॉर विश्वेश जी और वी फॉर विकास सेठी साहब, दोनों की तरफ से एक ही स्टॉक पर है ये कॉल। तो सेठी साहब तो चूंकि फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं और उनके टारगेट लेकिन तुरंत ही आ जाते हैं, और विश्वेश जी भी। तो विश्वेश जी आप जल्दी से स्टॉक बताएं, लेवल्स बताएं। अनिल जी देखिए, मेरा और सेठी साहब का अगर आप एक दिन का वेरिएशन लो तो मोरलेस सिमिलर टाइप के पिक्स होते हैं। बेस्ट पार्ट होता है कि वो रीजनिंग दे देते हैं और मैं टाइमिंग कर लेता हूँ। तो डीवीज लैब मुझे लगता है लेके जाना चाहिए। फार्मा मुझे लगता है ये हनन फानन में कहीं बॉटम हो रहा है। डीवीज लैब R&D के हिसाब से अच्छा लग रहा है, और करंट लेवल के हिसाब से अगर बाय करते तो मुझे लग रहा है बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं, 3430 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के टारगेट अपसाइड में ऑलमोस्ट 3600 तक के नजर आ रहे हैं। इसमें आप मुझे भी जोड़ ले साथ में। मैं भी इस स्टॉक को टाइमिंग परफेक्ट नहीं कर पाया, मेरे ख्याल से 3700 के आसपास मैंने वाई कॉल दिया था, तब से नीचे आया, लेकिन मेरा टारगेट 4200 से 4500 का अब भी डीवीज पर बरकरार है। बाजार के मूड माहौल के साथ थोड़ा नीचे पिछले 5 सत्रों में आया, लेकिन 100% तन और मन से मैं आपके साथ हूं, और सेठी साहब के नाम में ही सेठ है तो धन तो उनके पास है। सेठी साहब जल्दी से आप भी राय देना डीवीज पर। नहीं बिल्कुल अनिल जी, डीवीज लैब को बिल्कुल खरीदना है। करंट लेवल्स पे एक दमदार कंपनी है, और इसको आज पिक करने के पीछे भी कारण है। 6 तारीख यानी कि सोमवार को इसके नतीजे आएंगे, और बहुत ही दमदार रहने चाहिए इस क्वार्टर के नतीजे। तो आई वुड रिकमेंड बाय एट द करंट लेवल्स। पिटा हुआ भी है तो और अच्छा है, सेफ्टी है, और 3600 के मेरे भी टारगेट्स है बहुत ही शॉर्ट टर्म में। ओके 3600 तक के टारगेट आपके लिए शॉर्ट टर्म में आने की तैयारी में है इस वक्त डीवीज लैब पर भी। ये है वो स्टॉक जो दमदार एक्शन आपको दिखा सकता है। एक्शन भरपूर है बाजारों में। 33,000, माय गॉड 33,300, बात करते करते 200 पॉइंट का और उछाल। बिल्कुल सही है, रेजिस्टेंस सिर्फ 3:30 बजे है, उससे पहले कहीं भी नहीं। 700 पॉइंट के आसपास की तेजी निफ्टी में बनती दिख रही है, और 2500 पॉइंट का उछाल। सेंसेक्स में इतनी बड़ी तेजी बजट के दिन पिछली बार याद नहीं आता कब हुई। हमारी रिसर्च टीम आपको कुछ डेटा क्रंचिंग करके बताएगी कि पिछली बार बजट के वक्त इतनी तेजी कब हुई थी, लेकिन वाकई में नेवर लाइक बिफोर बजट, ऐतिहासिक बजट। और स्पेशली जब आप उम्मीदें कम रखें और आपको लगे कि शायद कुछ होगा नहीं, और बाजार अगर इतने हल्के पुट कॉल रेशियो पर जाए तो फिर जो तेजी होती है वो काबिल तारीफ है। 14,300 पार हो चुका है निफ्टी। अब लीजिए 14,325 बिल्कुल। तो दीप आप बात करते करते अगर आपने खरीदा है तो 200 पॉइंट निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में और 50 पॉइंट निफ्टी में आपको बनते हुए दिख रहे हैं। 2700 पॉइंट की रैली है सर निफ्टी बैंक पर। एब्सोल्युटली दमदार एक्शन है। चलिए आज का एक रिकैप ले लेते हैं। इतना इवेंट पैक्ड डे रहा है, अच्छी शुरुआत हुई बाजार की, फिर हमने देखा थोड़ी मुनाफा वसूली हुई, फिर बजट से पहले जो खरीदारी हुई 10:30 के आसपास, वहां से फिर खरीदारी रुकी नहीं है, और डेज हाई पर आप क्लोजिंग दे रहे हैं। जितने लॉसेस थे सारे के सारे आप रिकवर कर चुके हैं। बैंक निफ्टी पर नया है 33,000 के ऊपर पहली बार, बल्कि अब तो 33,300 के पास आप बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, और निफ्टी भी 14,300 के पार जाते हुए दिख रहा है। बैंक्स फाइनेंशियल्स आज के बिग विनर्स रहे हैं। इंडसइंड बैंक 15% के सर्किट के बाद अब फिर से तेजी दिखा रहा है, 15% से ज्यादा का उछाल। ICICI बैंक दोनों दमदार नतीजों पर आपको तेजी दिखा रहे हैं, 13% ऊपर। बजाज फिनसर्व, SBI, इन दोनों में भी आपने 10% का सर्किट देखा, और उसके बाद फ्रेश खरीदारी होती हुई दिखी है। L&T बढ़िया खरीदारी, यहां पर 9% की तेजी। HDFC लिमिटेड, अल्ट्राटेक और शीट सीमेंट, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, कहीं पर भी आप देखिए जबरदस्त एक्शन आपको इन स्टॉक्स पर आते हुए दिखा है। ITC कोई भी नेगेटिव चीज नहीं आई इस काउंटर के लिए। अनिल जी को भी हाई कन्विक्शन था, उनके टारगेट्स के भी करीब आया है। उन्होंने कॉल पर भी आपको कहा था कि हम 215 की कॉल ले सकते हैं, वहां पर भी एक्शन रहा। HDFC बैंक, टाइटन, टाटा स्टील, M&M, कोटक बैंक, किसी भी स्टॉक को देखिए अच्छी तेजी रही। कमजोर नतीजों की वजह से UPL, थोड़ा नतीजों के रिएक्शन, सिप्ला थोड़ी वीकनेस, डॉक्टर रेड्डीज नतीजों के रिएक्शन, टेक महिंद्रा। तो इन 4 स्टॉक्स में नतीजों के रिएक्शन वजह से आपने आज कमजोरी देखी है, और HUL जो एकदम सपाट रहा। इसके अलावा निफ्टी के बाकी स्टॉक्स में आपको दमदार एक्शन आज आते हुए देखा है। वायदा कारोबार की बात करें तो अगेन बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स ही है। RBL बैंक 13% की तेजी, चोला इन्वेस्टमेंट,
कमिंस, अशोक लेलैंड, डीएलएफ, अपोलो टायर्स, सेल, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, किसी भी स्टॉक को देखिए आपको जबरदस्त एक्शन आते हुए दिखा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, कैनरा बैंक, यहां पर अच्छी एक्शन रहा। एल&टी फाइनेंस, जिसका आज राइट्स इशू भी खुला है बाय द वे, टाटा पावर, पीवीआर, पीएनबी, रैमको, बजाज फाइनेंस, पीरामल, अंबुजा, ग्रासिम, जबरदस्त एक्शन रहा है यहां पर। अगेन अपार्ट फ्रॉम द नेम्स जो अर्निंग्स पर रिएक्शन कर रहे हैं, थोड़ा टोरेंट फार्मा में मुनाफा वसूली देखिए, लुपिन पर हल्के